GST compensation cess. GST compensation cess was levied to compensate the revenue loss for some of the manufacturing state. इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं कि जीएसटी के पहले क्या सिचुएशन थी और जीएसटी के आने के बाद क्या सिचुएशन हुई। जीएसटी के पहले ऐसी सिचुएशन थी कि जो स्टेट मैन्युफैक्चरिंग था उसको रेवेन्यू मिलता था टैक्स का, इनडायरेक्ट टैक्स का रेवेन्यू पूरा उसके पास जाता था। बट आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी वो पूरा रेवेन्यू कंज्यूमर स्टेट के पास चला गया। सो देर आर टू स्टेट, लेट अस टेक वन एग्जांपल दैट state X and state Y. So state X is a manufacturing state who is manufacturing the things, and state Y is a consuming the thing. So now before GST all the revenue goes to the state X, but after implementation of GST there is a whole paradigm shift. Now it will goes to the state Y. So now there is a loss of revenue for state X. So now what government has done, government has charged one additional cess, that is called GST compensation cess, to compensate the revenue loss to X state. So that is why what is the purpose of these state, these cess? The purpose is very simple. So whatever revenue loss arising due to implementation of GST, that will be compensated after implementing this law. Let us understand this concept in detail. GST compensation cess was introduced by the government to compensate for the possible revenue losses suffered by such manufacturing state. However, under existing rule, these compensation cess will be levied only for the first 5 years of the GST regime, from July 1, 2017 to July 1, 2022. So इसका मतलब ये होता है कि जीएसटी कब तक एप्लीकेबल रहेगा? जीएसटी विल बी अप्लाइड ओनली अप टू फर्स्ट जुलाई 2022, यानी वहीं तक वो अप्लाई होगा, उसके बाद वो इंप्लीमेंट नहीं होगा एज पर द एग्जिस्टिंग रूल। यानी 5 साल तक आपको अपना कोई नया सोर्स ऑफ रेवेन्यू इनकम ढूंढ लेना पड़ेगा कि जिसकी वजह से फिर बाद में आपको इसकी जीएसटी कंपनसेशन से इसकी गवर्नमेंट के पास जरूरत नहीं पड़ेगी। 5 साल के लिए गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी कि आपका जो भी रेवेन्यू लॉस होगा, जितना भी रेवेन्यू लॉस होगा, दैट विल बी कंपनसेट बाय अस फ्रॉम द रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम द जीएसटी कंपनसेशन सेस। सो याद रखना दिस पीरियड इज वेरी इंपॉर्टेंट, 1 जुलाई 2017 टू 1 जुलाई 2020। तो जीएसटी कंपनसेशन सेस कब तक रहता है? तो 2022 तक। Okay, now next point is GST compensation cess will be levied on luxurious item like high-end cars, महंगी कारें होती है उसमें, and demerit goods, seen goods. You can demerit goods or seen goods, SIN. Seen goods means ऐसे goods जो हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते, including tobacco, पान मसाला, aerated drinks for this period of 5 years. ये 5 साल तक जो हाई एंड कार्स है, डीमेरिट गुड्स है लाइक टोबैको, पान मसाला, एरेनेटेड ड्रिंक्स, ये सिर्फ एग्जांपल थोड़े बहुत, ये सब चीजों पे जीएसटी कंपनसेशन सेस लगता है। रेट अलग अलग होता है बट इस पे जीएसटी कंपनसेशन सेस लगेगा और उससे जो भी रेवेन्यू कलेक्ट होगा उसका यूज करेंगे उस स्टेट को जिसको रेवेन्यू का लॉस हो रहा है। नाउ इट इज लेविड ऑन interstate transaction as well as intrastate transaction of goods and services to compensate the revenue loss occurred to the state because of the implementation of GST in the country. So दोनों तरह के transaction, interstate means if Gujarat is doing some transaction with Maharashtra state, so it is a interstate transaction, and intrastate means within Gujarat. Say for example trader of Vadodara is doing some business with trader of Surat, so it is a intrastate transaction. So on all the types of transaction, GST compensation cess will be leviable. Now salient features of the state compensation mechanism, क्या क्या है ये इसका salient feature? It is a separate act, ये separate act है जो 5 एक्ट है, CGST एक्ट, SGST एक्ट,
UT-GST Act, IGST Act, and this is one another act. It is called Goods and Service Compensation to State Act 2017. This is the full form of GST compensation cess. Goods and Service Tax into bracket Compensation to State Act 2017 has been legislated from 1st July 2017. The objective of this act is to provide for compensation to state for the loss of revenue arising on account of implementation of goods and service tax. इसका ऑब्जेक्टिव वेरी सिंपल है कि जो भी रेवेन्यू लॉस हो रहा है, स्टेट को जो भी रेवेन्यू लॉस हो रहा है उसको कंपनसेट करना है. ये कंपनसेट करने के लिए ये जीएसटी कंपनसेशन सेस इंप्लीमेंट किया है गवर्नमेंट ने, तो ये उसका ऑब्जेक्टिव है. ऑब्जेक्टिव मीन्स हमें ये पता चलता है कि ये उसका लॉजिक क्या है, क्यों हमें ये सेस इंप्लीमेंट करने की जरूरत पड़ी. तो ये उसका ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि बहुत सारे स्टेट थे जिसको रेवेन्यू लॉस हो रहा था, तो वो रेवेन्यू लॉस कम करने के लिए ये जीएसटी कंपनसेशन सेस को इंप्लीमेंट किया गया. दिस एक्ट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया. ये पूरे इंडिया में एप्लीकेबल होता है, ऐसा नहीं कि कोई ऐसा स्टेट है जिसको छोड़ दिया गया है. इट इज इंक्लूडेड, इट इज कवर्ड ऑल होल इंडिया. It extend to whole India. The term cess means goods and service tax compensation cess levied under section 8 of GST Compensation to State Act 2017. अगर cess भी बोलता हूं तो इसका मतलब ये होता है goods and service tax into bracket compensation to State Act 2017 से इसका मतलब अब से ये होगा. The term compensation means what? Compensation का मतलब क्या है? An amount in the form of GST compensation as determined under section 7 of GST compensation to Cess Act 2017. इसमें सेक्शन 7 में उसका पूरा कैलकुलेशन दिया गया है कि हाउ टू कैलकुलेट दिस कंपनसेशन एंड व्हाट अमाउंट शुड बी गिवन टू स्टेट. कितना अमाउंट स्टेट को देने का, वो कैलकुलेशन किस तरह से होगा, वो सब सेक्शन 7 में दिया है. नाउ the provision relating to levy and collection of cess are given in section 8. किस तरह से उसका लेवी करने का एंड किस तरह से कलेक्शन करने का, that is given in section 8. Calculation is given in section 7, but levy and collection will be given in section 8. The period of levy is 5 years. ये 5 साल तक रहेगा ये, as per the existing GST law. The base year for calculation of compensation is financial year 2015-16. इसका base year 2015-16 है. The projected nominal growth rate of revenue during transition period has been taken at 14% per annum. यानी इसका 14% के हिसाब से कैलकुलेट करने का. जैसे मान लो कि कोई स्टेट का रेवेन्यू 100 रुपीज है, अब उसका एवरी ईयर उसको 14% इंक्रीज करने का. जैसे मान लो कि नेक्स्ट ईयर का रेवेन्यू उसका एज पर द लॉ, जस्ट आई एम टेकिंग वन एग्जांपल टू एक्सप्लेन द थिंग, उसको एज पर द कैलकुलेशन उसको मिल रहा है 150 मिलना चाहिए एज पर द कैलकुलेशन ऑफ जीएसटी कंपनसेशन सेस. उसने पूरा कैलकुलेट किया, उसको 150 मिलना चाहिए, बट उसको मिल रहा है 147. तो इसका मतलब 3 रुपीज का मिसिंग हुआ. तो ये मिसिंग हमें वो जीएसटी कंपनसेशन सेस में गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी. सो दिस इज द लॉजिक हाउ टू कैलकुलेट, एंड ग्रोथ रेट विल बी 14%. दैट मीन्स एवरी ईयर ही शुड receive 14% more in the form of tax revenue. Now compensation says shall be for the loss of revenue to state for the tax like state VAT, central sales tax, entry tax, octroi, local body tax, taxes on luxuries, taxes on advertisement. ये सारा टैक्स है ना जीएसटी के आने की वजह से चला गया. तो इससे जो भी रेवेन्यू मिलता था वो सारा चला गया स्टेट के लिए. तो इसी रेवेन्यू को कंपनसेट करने के लिए जीएसटी कंपनसेशन सेस इंट्रोड्यूस किया गया. हाउएवर एनी रेवेन्यू अमंग दीज स्टेट्स, these taxes related to supply of alcoholic for human consumption, entertainment tax levied by state but collected by local bodies, and petroleum products not part of the GST will be excluded for the base year revenue. यानी आप जब भी बेस ईयर का रेवेन्यू कैलकुलेट करते हो तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू कीप इन माइंड कि कौन सी चीजें हमें एक्सक्लूड करनी है,
कौन सी चीजें हमें इंक्लूड नहीं करनी है। जब भी आप बेस ईयर का वो 100 रुपीज का या 150 का कैलकुलेशन कर रहे हो, एज ए एग्जाम्पल आई एम टेलिंग यू, तो आपको ये चीजें नहीं लेने की। अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, क्योंकि उसका रेवेन्यू अभी भी स्टेट को मिल रहा है। एंटरटेनमेंट टैक्स लेविड बाय स्टेट, इट इज लेविड बाय स्टेट बट कलेक्टेड बाय लोकल बॉडीज। एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट, इसका भी रेवेन्यू अभी भी जीएसटी में, petroleum products are not included, it will be included when GST council will notify it, but इसका भी रेवेन्यू स्टेट को मिल रहा है। सो दिस इज टू बी एक्सक्लूडेड वेन एवर यू आर कैलकुलेटिंग बेस ईयर रेवेन्यू। सो किस लिए वो कौन सा लॉस हो रहा था उनको और कौन सी चीजें उनको एक्सक्लूड करना है, वो आपको ध्यान में रखना है। तो स्टेट वैट, सेंट्रल सेल्स टैक्स, एंट्री टैक्स, ऑक्ट्रॉय, लोकल बॉडी टैक्स, टैक्सेस ऑन लग्जरीज, टैक्सेस ऑन एडवर्टाइजमेंट, ये सारी चीज का उनको लॉस हो रहा था, ये अब नहीं मिलने वाले, इसलिए जीएसटी कंपनसेशन सेस इंट्रोड्यूस किया। बट जब भी आप बेस ईयर का रेवेन्यू कैलकुलेट कर रहे हो तो आपको ये 3-4 चीजें हैं जो ह्यूमन कंजम्पशन, अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, एंटरटेनमेंट टैक्स लेविड by the state but collected by the local bodies, and petroleum products not part of the GST will be excluded whenever you are calculating base year revenue. Thanks for watching my video. Do like and subscribe my YouTube channel.